Okay, hello everyone. This is Prashant Tiwari. In this session, this is especially for 10th standard. Today, in the revision of chapter number 3, we are going to continue to collect all the concept and all the things about the chapter number 10, that is the linear equation of two variables. Okay, in that I am going to cover the few methods, few tricks, and how to remember the things of chapter number 3. So according to that, stay tuned with me and let's start with that. So linear equation of two variable, that is what we are going to continue. Linear equation of two variable, as we know, in this equation what we are having, we will having the two variable with the maximum degree of 1. We will have the maximum degree of 1. Okay, so I don't need to make that point that what is the linear equation and how we can identify it. Okay, so linear equation, the standard form is what? That is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are the constant. Okay, this is the constant. A, b, c are the constant. Okay. Now that is the standard form of the linear equation. Now when we solve the linear equation, solving the linear equation, we require a pair of linear equation. What we require? We require a pair of linear equation. So in the pair of linear equation, we will have a standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So that is what called the linear pair of equation. Okay, in two variables. Okay. Now what is the point? Point is that in this a square plus b square not equal to 0. A square plus b square is not equal to 0. Where a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब क्या है? Real numbers. And these all are the real numbers. And similarly, b1 square plus b2 square will not be the a1 square plus b1 square should not be equal to 0. a2 square plus b2 square should not be equal to 0. Okay, so then it will be the linear form of two variable equation. Then solution of the linear equation. Solution of the linear equation will be what? Solution of the linear equation can be, this equation can be solved with the help of four methods. First method is called the elimination method. Second method is called the substitution method. Third method is called the cross multiplication method, and the fourth method is called the, that is, graphical or geometrical method. But as far as this pandemic is going on right now, that is COVID-19, because of that, NCERT, CBSE has reduced the syllabus. In that, they have taken out the cross multiplication from out of the syllabus. For as far as this particular year, cross multiplication is not going to be asked for the board examination purpose. Okay, so keep that in your mind. But this is only for this particular year. Means the exam which is going for the 2021 March. That will be the, for that particular year they have taken out that one. Okay. Now after that, when we will be able to get in this, and if you remember the 9th standard, in the 9th standard what we had solved, in the 9th standard we had solved that equation, we had made a line. When we had this equation standard form, so taking x and y, we used to find the box and then we plot it according to that, so we were getting the line. So what does that mean? That means the one equation, the linear equation of two variable, source or represent a line. It represents a line. So if we are having the two line, so what are the possible conditions for two line? Suppose this is line N and this is line M. हमारे पास दो लाइन है. In both the lines, what are the possible conditions that they can be arranged? मतलब इन दोनों लाइन को अगर हम अरेंज करें तो दो वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. Say for example, we can arrange it like that. इसको हम दो फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं
तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये लाइन आपका M है, ये लाइन आपका L और M है, इसको एक पहला अरेंजमेंट इसका ये हुआ। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? दूसरा अरेंजमेंट इसका हो सकता है कि लाइन एक पे ही हो, दोनों लाइन एक पे ही हो, so this could be our second arrangement, and the third arrangement could be like this. तो तीनों अरेंजमेंट का मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो दोनों इक्वेशन होंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, that will have 2-3 chances of the getting the answer or not. First chance is what? First chance that we should get at least one intersecting point. Okay. Another option, second option is what? The line will be same. And the third option, we will never get any intersecting point of the line. We will never get any intersecting point of line. What does that mean? That means कि वो लाइन या वो पेयर का कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन मिलने के 3 चांस है। पहला, एक सॉल्यूशन मिले यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, तीसरा एक भी सॉल्यूशन ना मिले। So we are having these 3 conditions. First condition, one solution, many solution and no solution. अब ये solutions मिलेंगे कब? When we will be able to get these solutions. Question is what? When we will be and how we can identify that, how we are going to get the answer. Okay? So let us see that. Now suppose we are having two equations. Equations are what? Suppose we are having one equation that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Another equation we are having that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay? This is the equation which we have right now. Now, over here we are having a1, b1 and c1, a2, b2 and c2. So these are the constant we are having. So basically we are having to do with this constant only. Okay? And what we are going to do? We are going to check whether it is a consistent, inconsistent or dependent or and consistent. What is that things? Let us understand. Now if we are getting the first condition, that is a1 upon a2, b1 upon b2 not equal to, अगर हमने चेक किया a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन का हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो पक्का फाइनल हो गया। क्या हो गया? इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिलेगा एक, वो तो 100% फाइनल हो गया। दूसरा, सेकंड कंडीशन व्हिच वी आर हैविंग दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो इसमें हमें सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी सॉल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे। The third one is that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. In this case we will have the dependent and consistent solution, मतलब सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहला कंडीशन जो है ग्राफिकल मेथड, इसका क्या होगा कि भाई पहले में a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होगा, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड, जो ग्राफिकल वे उसका रिप्रेजेंट करता है दैट इज व्हाट, कि उसमें हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, और जो थर्ड सॉल्यूशन है, थर्ड वाला, उसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं ग्राफिकल वे में, तो इसका लाइन ऐसे होगा, वन सॉल्यूशन। इसका लाइन कैसे होगा? नो सॉल्यूशन। और इसका मेनी सॉल्यूशंस।
Okay, so these are the type of and the category of the solutions which we can have in this particular chapter. Okay, अब इसको solve करने के इन equations को solve करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं बेसिकली जो हम प्रैक्टिस में लेंगे इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। और as far as 10th स्टैंडर्ड कंसर्न आपके चैप्टर में तीन सॉल्यूशन को यूज किया गया है जिसमें से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को निकाल दिए गए। तो बेसिकली हमारे पास अब जो बनता है वो बनता है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक ही इक्वेशन को मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं और लेट अस सी दैट हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दोस टू। Okay, so one by one I'm taking the one example only so you can have the best idea about that. So let us solve that. Okay, suppose we are having the one equation. What is consistent? अच्छा, consistent मतलब कि जिसका आंसर आ जाए, फिक्स आंसर आ जाए, that is consistent. I think I am fact that is causal. I am inconsistent. Okay, consistent means that is the जिसका solution आ जाए, inconsistent means जिसका solution हमें ना मिले, जिसका ये solution ना मिले, that is inconsistent. Consistent का मतलब जिसका solution आ जाए. Okay, hope it is clear. So let us move forward. Suppose we are having the two equation. One equation is x plus 2y minus 3 is equal to 0. Another equation we are having 2x minus y plus 5 is equal to 0. So these are the two equations which we are having. Now we will be solving these equations by two methods. One is the elimination method and another is the substitution method. So I am making the part of two sides of this board. One side I will be using the elimination method and another side I will be using the substitution method. Okay. Now let us do that. So x plus 2y is equal to 3. 2x minus y is equal to minus 5. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड का नाम ही जैसे आप सुन रहे हो एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेशन में आप चीजों को एलिमिनेट करोगे। क्या करोगे? आप उसको एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करना मतलब क्या? एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि आप एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर दोगे। क्या कर दोगे? आप एलिमिनेट कर दो किसी एक पर्टिकुलर टर्म को, तो आपका पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा वन वेरिएबल में, और वन वेरिएबल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे हम? जब कोई दो टर्म सेम हो जाएंगे तब एलिमिनेट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किसी दो टर्म को एक पर्टिकुलर इक्वेशन के एक एक टर्म को हमें सेम करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख पाते हैं हमारे पास क्या है? x है, यहाँ पे 2x। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे 2x मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस डू दैट। तो हमें क्या मिला? 2x plus 4y is equal to 6। दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वो इक्वेशन ऐसे कितना रहेगा? हमारे पास आया 2x minus y is equal to minus 5। अब इसको हम करते हैं सबट्रैक्ट। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए ये एक पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया हमारा। दैट इज व्हाट कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। नाउ 4y plus y, so that is we are getting 5y is equal to 6 plus 5 11। तो y is equal to क्या मिला हमें? 11/5। y is equal to क्या मिला? 11/5। अब y is equal to 11/5 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो, आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ये दूसरा वाला इक्वेशन लेता हूँ, तो 2x minus 11/5 is equal to -5। ठीक है, अब 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 10x। क्या मिलेगा? 10x minus 11 is equal to -25। -11 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +11। तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें मिलेगा implies that 10x is equal to 20 -25 plus 11, so 1 minus 5 minus 1 4 and 1, so that is -14
implies that x is equal to, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, implies that x is equal to minus 14 upon 10, that will give you minus 7 upon 5. So x की वैल्यू में क्या मिली, minus 7 upon 5. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, जैसे इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करना है हमें. वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दूसरा क्वेश्चन. तो किसी एक चीज को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये दूसरा वाला है, उसके हिसाब से हमें उसको वहां पे रखना है. ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम इसको मानते हैं x को हम सब्जेक्ट बना देते हैं. क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट. तो x is equal to 2y cos साइड 3 cos साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 3 minus 2y. ये हमें इक्वेशन मिला. मान लो ये हमारा इक्वेशन है 1. ठीक है, अब 1 को हम सेकंड इक्वेशन में यूज करते हैं. तो 2 into 3 minus 2y minus 1 is equal to minus 5. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 6 minus 4y minus 1 is equal to minus 5. 6 को साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, minus 5. So minus 5y is equal to minus 11. So y is equal to 11 upon 5. As you can see, we had got the answer over here, that is the 11 upon 5. So we got the first answer same. Now let us put the value of this y into the first equation. So what we will be getting? We will be getting, as you can see over here, 3 minus 2 into 11 upon 5. Okay? So that will be 22. So let us solve it here. So we will get 3 minus 22 upon 5. So 5 3s are 15, 15 minus 22. So that is minus 7 upon 5. So that is the value of x. So here we got the value of x. So that is the all the two methods by which we can solve the equation. So that is called the substitution method and the elimination method. Okay. Now if anybody has any doubt till now, you can message me on the you can write your comment on the chat box whether you are having or not, so I can move forward. Otherwise I will take the one more example. Okay, now I think that nobody has any question regarding that, those who are right. Okay, now we'll move forward. अब इस चैप्टर से एक टाइप का और सम रिड्यूस हुआ है, जो था कन्वर्टिंग टू द रिड्यूसिबल फॉर्म. एक 1/2x प्लस 1/3x प्लस समथिंग इज इक्वल टू ऐसे हुआ करता था क्वेश्चन. वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्यूशन से निकल गया है लगभग, जिससे आपको एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया करता था 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 4 एंड 1/3x minus 1/9y is equal to 7. ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें हम फिर सपोज करते थे 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. तो ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकल गया है, तो ये क्वेश्चन भी इस बार वाले आंसर में नहीं आएगा. ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. और लीनियर इक्वेशन का एक्चुअली वही टॉपिक जो है जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक समझ में आएंगे. ये तो सिर्फ सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं. तो अब जो आप इक्वेशन बनाओगे उसको सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन नहीं की गई होती है. ये सारे इक्वेशंस जैसे होंगे कि जो बेसिक क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे डायरेक्ट टू सॉल्व, उसमें ऐसा बोला गया होगा आपको कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड. अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो यू कैन गो विद द एनी मेथड. ओके, दैट इज नो इशू. सपोज इफ इट इज an MCQ क्वेश्चन, so nobody is going to ask you show the method, so you can go with the any. You can go with the any. Okay, any formula you can use. You can use the elimination, you can use the cross multiplication, you can use the this one called substitution. So actually easiest method is that is the elimination method. In the elimination method
you are having the less chance to do the mistakes. While in the substitution method, maximum chance is to doing the this. Why? Because in that you need to manipulate the data. So you are having the you may find that it is difficult. Actually, they are not difficult, but you may find it is difficult. Okay. Now, what are the three different methods? First one is the speed and distance. Second one is the upstream and downstream, and third one is the man and ball. These are the three most important topics of your this chapter. So let us start one by one. Okay. So first I am taking the upstream and downstream, that is for the boat and distance. Okay. Now boat and distance, there are few keywords. Actually, you can use them as a keyword. That what is the keyword of those? So let us see that keywords क्या है. जैसे एक है स्ट्रीम. तो स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? स्ट्रीम का मतलब हुआ कि पानी जो फ्लो कर रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है उसको मूविंग वाटर को हम स्ट्रीम कहते हैं. फिर एक है अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम मतलब ऐसा है कि पानी जैसे मान लो इधर से इधर जा रहा है, तो अपस्ट्रीम आपकी बोट इधर चल रही है, मतलब पानी के अपोजिट में, पानी का फ्लो जिस साइड है उसके अपोजिट में आपका फ्लो है, दैट इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जैसे पानी इधर से चल रहा है और आप भी इसी साइड जा रहे हैं, तो पानी के फ्लो के साथ अगर आप चल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम. एंड द लास्ट कीवर्ड इज दैट इज द स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में ऐसा होता है कि आइडियली मान लिया जाता है कि पानी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो स्टेबल, पानी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो स्टेबल है, कहीं जा नहीं रहा है. Pani is not, water is not moving at that place, which is a still condition. Okay, so these are the four keywords which you need to remember. That is the stream, upstream, downstream, and the still water. These are the four keywords. Okay, now what? Upstream, downstream के formula पर लेके confused रहते हैं student. So let us discuss about that. That what is the upstream and downstream. Okay, now upstream means what? जब आप opposite में जा रहे हो, तो आप सोच के देखो कि आप मूव कर रहे हो यहां से. जैसे अपस्ट्रीम का मैं बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो जैसे स्टेयरकेस होता है मॉल में, ठीक है, मॉल में आप चल रहे हो, दो सीढ़ी नीचे जा रही है, उससे आप ऊपर आने की कोशिश करो तो कैसा होगा? आप जितनी देर में आ जाना चाहिए, जैसे मान लो अगर 25 स्टेप की सीढ़ी है तो आपको 50 स्टेप भी लग सकते हैं चढ़ने में. सो दैट इज व्हाट दैट इज कैन बी कंसीडर एज अ अपस्ट्रीम. मतलब पानी इधर से फ्लो के इधर जा रहा है, बोट को इधर आ रहा है, तो पानी बोट को धक्का मार के पीछे ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बोट की स्पीड कम हो जाएगी, बोट की स्पीड कम हो जाएगी. तो अगर आप सोचो कि u जो है वो स्पीड ऑफ बोट है, क्या है? u इज द स्पीड ऑफ बोट एंड v इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. एक हम फिक्स सपोजिशन ले लेते हैं, दैट इज सपोज u इज स्पीड ऑफ बोट. Speed of boat. U is the speed of boat and V is the speed of stream. Means boat, that is U kilometer per hour, and stream, that is V kilometer per hour. These are the two speeds which we are having, that is the speed and boat. Now अगर आप कोई बोले कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो पानी के स्पीड का माइनस करना पड़ेगा बोट के स्पीड से. सो व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी इन अपस्ट्रीम इट will be u minus v kilometer per hour. U minus v kilometer per hour. What will be that? That will be u minus v kilometer per hour. Okay, and the downstream, that will be u plus v kilometer per hour. U plus v kilometer per hour. That will be the upstream. And the average speed of the boat. Average speed of the boat, what will be? Upstream speed plus downstream speed upon boat speed in the still water. Average speed अगर फाइंड करनी है तो क्या होगा? Upstream plus downstream upon speed in
स्टिल वाटर। क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन बोट स्पीड इन द स्टिल वाटर। ओके, तो ये होगा आपका एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। ओके, सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा सॉल्यूशन लाने के लिए। ओके, अब इसके साथ में आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम स्पीड, टाइम बेस्ड क्वेश्चन की मतलब एक बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अपस्ट्रीम इतना है, डाउनस्ट्रीम इतना है, या जाने में इतना स्पीड कवर किया उसने, आने में इतना स्पीड कवर किया, तो टाइम कितना लगेगा वो बताओ। So the time taken by the boat to travel the upstream and downstream, so that can be the one kind of question. Second kind of question can be that the speed based question. Speed based question मतलब a boat is taking this much time to cover that much distance. A speed based question कैसा होगा? Your boat is taking this much time to cover that much section of the distance, so that will be the speed. Next one will be the question on the average speed. Average speed कितनी होगी? फिर question based on the distance. अब इसके लिए हमारे पास हमें एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो होना चाहिए हमारे पास, that speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. अब इसको हम अलग-अलग तीन तरीके से, S के लिए हमारे पास है, D के लिए हमें फाइंड कर सकते हैं, T के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमें याद हमेशा रखना है। ठीक है, उसके बाद इसके मैं एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एक बार। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आपकी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, दैट इज द रितु कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। नाउ सी व्हाट इज गिवन, 20 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस इन 2 आवर्स। नाउ what this question is talking about, this question has asking us to the speed. This is the speed based question. Okay, second one is and the upstream 4 kilometer in 2 hours. अब देखो यहाँ पे टाइम फिक्स है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और बात किसकी करनी है हमें? स्पीड। फाइंड द स्पीड इन द मूविंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब पानी कितना तेज बह रहा है उसका स्पीड और बोट का जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो अपस्ट्रीम का हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अपस्ट्रीम इज दैट इज u minus b, downstream is that is x plus y या u plus b। अब अगर जाते टाइम इतना टाइम लग रहा है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या है? u और b, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? u minus b, तो u minus b यानी दैट इज द स्पीड। कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज 20 किलोमीटर, सो 20 अपॉन 2, so that is distance upon time, तो 2 यहां पे आ जाएगा, तो 2u minus v is equal to 20, so that is what our first equation। सेकंड डाउनस्ट्रीम का ऐसे इक्वेशन बनेगा, डाउनस्ट्रीम का क्या होगा? u plus v, उसमें क्या है? 4 किलोमीटर है, तो 4 upon 2, let us solve it। so in that case what will be the equation? In that case equation will be u plus v is equal to 4 upon 2, so once again this will be 2u plus v is equal to 4, two equations we are having, now solve them, so you will get the answer। so that is the speed based question। similarly question can be asked for the time based also and for the distance based also, so that is the another। second one is that is the man and work, second thing is the man and work, and third thing is that is the speed and distance। man and work में हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमें यूनिटरी मेथड से चलना है। 8th स्टैंडर्ड अगर आपको प्रॉपर्ली याद होगा तो वहां पे जब हमने पढ़ा था एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? उसका नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज अगर आप याद करोगे तो उसमें दो मेथड थे, एक था जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे और दूसरा था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो हमारे यहाँ जो मार्केट सेलर होते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, उनको जाके आप बोलोगे मुझे आधा किलो चाहिए तो आपको फटाफट आधा किलो का प्राइस बता देंगे। 400 ग्राम बोलो, 300 ग्राम बोलो, या आप जाके उनको बोलो मेरे पास 20 रुपए है, कोई चीज जो 40 रुपए या 50 रुपए किलो है, आप उनको बोलो मेरे पास 20 रुपए, तो फटाफट वो करके बता देंगे। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। आई हैव सम क्वेश्चंस।
u minus v and u plus v, why we take upon 2. Okay, because upon 2 is that is 2 hours it is taking for the traveling. The question is what? Question is 20 kilometer in 2 hours. 20 kilometer in 2 hours. So as I have written, speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. So upstream में क्या speed है boat की? That is u minus v. So that is our speed. So speed is equal to distance upon time. तो distance कितना लिया? 20 किलोमीटर. Time कितना हुआ? तो 2 किलोमीटर. इसलिए 20 upon 2 हुआ. ठीक है, इसीलिए 4/2 इसीलिए हुआ क्योंकि वो स्पीड 4 डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर किया और टाइम 2 किलोमीटर कवर हुआ. होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ तो यूनिटरी मेथड से एक वन वुमेन वन मैन का पहले काम निकालना है, वर्क और वो, तो उसके हिसाब से करना है. वुमेन एंड वर्क and speed and distance, that will continue in the next video, as this video is getting too much length. Now we are having 32 minutes, we are completed, so we will stay next time and we'll solve that problem. And the chapter number 2 also I'll take to the revision, so that will be scheduled around in evening time. So I'll inform my students, and those who want to join, you can join further. Thank you.